Item number 19, the Juvenile Justice, Care and Protection of Children Amendment Bill 2021. Honorable Minister. अडॉप्शंस के संदर्भ में भी जिला मैजिस्ट्रेट के पास हम पूर्ण रूप से पावर्स दे रहे हैं। 2015 में अडॉप्शन की दृष्टि से एक निर्णय लिया गया कि कोर्ट्स को तवज्जो दी जाए, लेकिन ये भी कहना सही होगा कि आज की तारीख में मार्च 2021 में देश में 900 ऐसे केसेस हैं जो वर्षों वर्ष से लंबित हैं, क्योंकि उन्हें समय पर अडॉप्शन प्रोसेसेस कंप्लीट करने में our courts are so burdened that they are not getting the help that they constitutionally deserve to adopt these children who need protection and care. जब एक एनालिसिस हुआ अडॉप्शन प्रोसेसेस का, उस एनालिसिस में ये पाया गया कि जो होम स्टडी रिपोर्ट बनती है, जिसमें एक सोशल वर्कर जाकर कौन सा परिवार बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, उस पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला हो, उसका स्टिपुलेटेड टाइमलाइन है 30 दिन। वर्तमान में 78 दिन लिए जाते हैं सिर्फ एक रिपोर्ट बनाने में। अगर एक चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को 0 to 2 years तक के बच्चे को सिर्फ क्लियर करना है अडॉप्शन के लिए, स्टिपुलेटेड टाइम है इस काम को पूरा करने के लिए 60 दिन का, लेकिन वर्तमान में वो लेते हैं 150 दिन। और अगर 2 साल के बच्चे से ऊपर के बच्चे का क्लियरेंस करना हो, पेपर वर्क करना हो, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास स्टिपुलेटेड टाइम है क्लियरेंस के लिए 120 दिन का, और सर वो 265 दिन लेते हैं। जो बच्चे सरेंडर होते हैं सिस्टम में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास स्टिपुलेटेड टाइम है कि उसको 60 दिन में पेपर वर्क आप पूर्ण करें, लेकिन वर्तमान में वो 130 दिन लेते हैं। अडॉप्शन की फाइलिंग के लिए जो पेपर वर्क है उसका टाइम है स्टिपुलेटेड 10 दिन, लगभग 60 दिन लिया जाता है। और अडॉप्शन ऑर्डर को रिसीव करने का स्टिपुलेटेड डेट का टाइम है 60 दिन, और 107 दिन से ज़्यादा वो समय लिया जाता है। एक बार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की प्रायोरिटाइजेशन लिस्ट में ये आ जाए that they are now hereby legally ordained to not only review but to ensure implementation, तब stipulated timelines को meet करने में सहयोग होगा। The proposed amendment puts the entire onus of the child's welfare on the district magistrates, ignoring the fact that the DMs have already been overburdened. They are overburdened authorities with the charge of the entire district on their shoulders. I think a lot of Pratijat ji as well as Praneet ji talked about the DM situation. I think there were two contrasting views. I would like to add to this that when Smriti ji brought this to our notice, we had a discussion in Maharashtra. We even spoke to our collectors and district magistrates that kya kare, are you open to working? They are absolutely open. I don't think they are feeling that this is going to be highly taxing for any administration. The cause is so good that please be rest assured, I'm sure our district administration would be very proud. Now, district courts were empowered till now. That is the thing. They were empowered to give adoption. Now, this act take over the power from the district court in the matter of adoption and entrust it with district magistrate. I strongly object it, sir. That's not fair. Some of my friends were saying that the district magistrate is overloaded and he cannot take this. That is not my reason. Judicial decision is having its own significance. But if we take away the judicial power and hand over that to the district magistrate, I respectfully differ with your views in this. So, with all humility, I would say that
I was serving as such in a couple of districts in Orissa, my cadre. But at the same time, let me tell you, sir, with all humility, that the DM is the only person who is the chief coordinating center in a district. And when these things are done, lots of coordination is required among various agencies, among various stakeholders. You know, implementing things require a leader. And in a district, only the collector can be a leader, a collector or a DM who can actually collaborate and coordinate with everybody. And that is why it's very important to have the importance, or rather the responsibility given to the district magistrate, which includes the additional district magistrate as per the bill which has been submitted before us. एक प्रिजम्पशन है सर, जो आज संदेह है, जो कई माननीय सांसदों ने व्यक्त किया। संदेह ये कि जिला प्रशासन में डीएम के पास पहले ही बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य है, लेकिन चुनौतियां निश्चित रूप से हैं। They are overloaded and hence protection of children cannot become the priority of any DM. I, as humbly as I can, disagree with it and invoke statements made by Supriya Suleji, who represented the state of Maharashtra and the conversation she had with DMs in her state, who are more than happy to share this burden. However, I must here highlight, sir, वर्तमान परिस्थिति में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ये जिम्मेदारी है कि वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के काम को रिव्यू करे। वर्तमान परिस्थिति में ऑलरेडी जिला मैजिस्ट्रेट के पास ये दायित्व है कि जेजेबी का भी काम जो है उसको वो रिव्यू करे। आज का जो अमेंडमेंट है वो रिव्यूइंग की पद्धति से आगे बढ़कर प्रशासनिक सिनर्जी पर जोर देने का काम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का काम बंद हो जाएगा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का काम बंद हो जाएगा और सारा काम का भार डीएम पर आने वाला है, ऐसा नहीं है। The district magistrate becomes not only the reviewing, the supervising, but also the synergizing officer for all needs of protection of children. As far as the proposed changes are concerned, number one is definition of serious offenses. Now, there are three kinds of offenses that the JJ Act talks of: petty offenses, serious offenses, and heinous crimes, as we are aware of. Now, we should all agree to the fact that our children should be corrected, should be reformed, and should not be punished. You know, punishment actually doesn't correct the system. We want the children to be safe, to be sound, to be corrected, to be reformed. And that is why there was the need to change the definition of serious offenses. Serious offenses are those offenses for which the punishment as prescribed by IPC or any law in force is maximum imprisonment between 3 and 7 years, number one. Number two, the serious offenses as of now are cognizable in nature. That means a child can be arrested without a warrant, right? Now here there was need to change this definition, and the definition of serious offenses was changed, has been proposed today to include crimes for which the punishments are maximum imprisonment for more than 7 years. However, minimum imprisonment has not been given, or maximum imprisonment beyond 7 years, but minimum imprisonment is between 3 and 7 years. This has been included. Now, this is also the definition of serious offenses. And number two, and very important, all these serious offenses have become non-cognizable. A child cannot be arrested now without a warrant. This is the proposal today before the House. Now, sir, as I mentioned, and Honorable Minister just said, I reiterate, we need to increase, rather widen the ambit of serious offenses. We need to bring down, or rather narrow, the ambit of heinous crimes. Our children need not be treated as adults. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मंत्रालय द्वारा दिए गए क्वेश्चनेयर के माध्यम से
देश भर के 7,000 से ज़्यादा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का मुआयना किया, ऑडिट किया। उस ऑडिट में महोदय कुछ गंभीर चीजें पाई गई। 29% ऐसी इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में जेजे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड ही नहीं थी। 26% तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर ही नहीं था। 1/4 में बच्चों के नहाने के लिए इलाका ही नहीं था, बेदिंग एरिया ही नहीं था। 3/5 had no toilets for these children. 1/10 had no provision for drinking water. We had, sir, 15% child care homes, which have absolutely no provision for a separate bed for a child. 1/10 did not even want to adhere to a diet plan for a child who has been rescued, who needed help. महोदय, कई बार जिले में बच्चों के शोषण की गंभीर रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन सतर्क होकर एक्शन लेता है। आज जो अमेंडमेंट मैं प्रस्तुत कर रही हूं भारत सरकार की ओर से, उस अमेंडमेंट के अंतर्गत ध्येय हमारा ये है, वी डू नॉट वेट फॉर अ चाइल्ड टू बिकम अ विक्टिम। हम सतर्क हों ताकि प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से हम अपने बच्चों का संरक्षण कर सकें। चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हो, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, कहीं ना कहीं एक सुपरविजन की जरूरत थी। और इसीलिए बच्चे की सुरक्षा संरक्षण को केंद्र बिंदु बनाते हुए जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इस अमेंडमेंट के माध्यम से सशक्त करने का महोदय प्रयास है। Sir, because the special homes which are running at present are in a very poor position and need to improve for more better functioning to get the desired results. It is also a fact that institutional setup required under the Juvenile Justice Act so far has not been built up completely, and district level institutions generally lack the infrastructure and staff to adequately execute it. This is really impairing the work of the rehabilitative and reformative programs for ensuring juvenile justice to child. The other thing was the budget cuts and the superficial changes that have been made. I know that in 2021 you had an allocation of about 1,500 crores, which was then downsized to 800 crores. And I think this year it's come up a little bit to 900 crores. And I think the committee reports, like you yourself said, have shown that there's been gross negligence in a lot of the homes where even there are no special toilets, there's no place where they can change, there's no separation for the sexes, there are no beds, and a lot of other things. So to make sure that all this is properly dealt with, I think that the budget allocation should have been a little bit more. मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रणीत जी को अवगत कराना चाहती हूं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम की दृष्टि से अगर बजटरी वित्तीय आवंटन में उल्लेख करूं तो साल 2009-10 में 60 करोड़ था पूरे देश के लिए। साल 2011-12 में 270 करोड़ था। साल 2013-14 में 300 करोड़ था। और मोदी सरकार में साल 2020-21 में 1500 करोड़ है।